Astha, have you started making the file? Thursday is the first date of submission for SD curve, electrodiagnosis, and the low frequency current. मैम आपने तो एसडी कर्व बोला था सिर्फ. लो फ्रीक्वेंसी करंट तो करना ही है. मैम वो बाद में ओके. कर Yes, लेंगे. ma'am. अच्छा एसडी कर्व तो शो मी एसडी कर्व. एक्चुअली यू नो एसडी कर्व. चलो ठीक है, कर दो एसडी कर्व. Ma'am, we only और have to मैम do दो SD कौन से curve. थे? What, Hera? See, all of your files should look the same, okay? So Yes, ma'am. if someone, before starting, you can ask me that how to go about it. Yes, Astha, you were asking something? No, ma'am. Hira is asking, ma'am. Yes, Hera. मैम एसडी कर्व के बाद कौन से टॉपिक्स हैं? Low frequency current, beta. Faradic current. Uska indications, contraindications, therapeutic effects, physiological effects. How do we use the surge, Faradic current? मैम हमें एसडी कर्व में क्रोनिक्सी और रियो बेस भी करना पड़ेगा. Yes, beta. Without Chronexy and Rio base, so SD curve is सीरियल नंबर incomplete. मैम Yes, Tanishka. मैम सीरियल नंबर वाइज सब हेडिंग्स बता दो ना ताकि सबका मतलब सेम हो, सेम सीक्वेंस. Exactly, ma'am. बेटा आप तो मुझे बताओ ना, what have you prepared? As you are not in school going that I have to tell you इसके बाद ये है, इसके बाद ये है. आपने जो प्रिपेयर किया वो मुझे बताओ. I will correct it. Okay. So today someone from the class just make it and WhatsApp me. I will tell you the changes, what all changes to be done. Okay. Okay, Tanishka, Hera, Khushbu, Astha. Yes, ma'am. Ma'am, has somebody started? I don't know. I think none of you have started, as per my knowledge. Because nobody has approached me that how to write it in the file. So if you've not approached me means, because earlier what used. मैम क्या आपने कह बोला था कि आपने मैम मॉड्यूल 1 का मैम जितना भी है एलएमएस पे एसडी कर्व रियो बेस और क्रोनिक्सिया को मैम बस उतना ही लिखना है. बेटा वो तो मैंने टीम्स पे अपलोड कर दिया ना आस्था. मैम आपने उतना ही लिखने के लिए बोला था हमें फाइल में भी. हाँ वो Tanishka is saying, ma'am, please tell us about the subheadings so that the subheadings is common for everybody. Okay, so she's saying, ma'am, subheadings bata do. So I am saying ki how can I tell you the subheadings? You tell me that what according to you are the subheadings, then I will make the necessary changes. आप समझे मेरी बात आस्था? यस मैम. ठीक है. Yes, ma'am. Okay, so today we will be discussing about some specialized techniques. You know, there are some specialized techniques also, which is by the Faradic current. Okay. Just tell me when my screen is visible. Okay. Okay, so you have a test also today, na? At 4 o'clock? No, at 3 o'clock. Yes, ma'am. At 3 Yes, o'clock. ma'am. 3 o'clock. Yeah, my Ma'am, your screen screen is visible. okay, very good. So this is low frequency stimulation. So we have some specialized techniques also. First is Faradic foot bath. Faradic foot bath. Okay. Now what is the bath method? See what happens in this bath method. There is application of Faradic current to the body part which is in the tub, tray or tank which is containing some water. That is why it is known as bath method of application. Okay. Now
depending upon the placement of the electrodes, these can be bipolar or unipolar. Depending upon the placement of electrodes, these can be bipolar or unipolar. अब bipolar का मतलब क्या होता है? When both the electrodes are kept in the water. Okay. And unipolar का मतलब क्या होता है? When one electrode is kept in the water, while the other electrode is kept at any convenient part of the body. Okay, students, is it clear? So here the Yes. bipolar unipolar definition changes when it comes to bath method. Yes or no? Yes, Yes. ma'am. Yes. Now the advantages of bath method. There is skin resistance which is lowered considerably by prolonged soaking in water. Am I audible? Students, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes. I think I was disconnected for a second. Yes? Okay. So we were here. Everybody is clear with this? Yes, ma'am. Yes. 4B. Okay. Next is, what are the advantages of bath method? Skin resistance is lowered considerably by prolonged soaking in water. All of you agree? How many of you Yes, ma'am. have swimmed ever in your life? What happens when you come out of the water? We feel less weight, ma'am. Yes, you feel less weight. There is a principle of buoyancy. Okay, so buoyancy is because the skin resistance is lowered when we prolong the soaking in water. Okay, now water makes perfect contact with the tissues, right? Now there is wash of electrodes which are formed under the electrodes. Wash of electrolytes which are formed under the electrode, because you all know that water in itself is made up of hydrogen and oxygen. These are ions, so they will make a ionic reaction. Yes or no? बनाएंगे कि नहीं? Yes, ma'am. जहां पे आयन Yes, ma'am. होंगे और करंट के थ्रू पास होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन करेंगे ना, आउटर शेल से इनर शेल पे आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे ना? Yes, ma'am. So there will be wash of electrolytes formed under the electrode. Now what are the disadvantages? That current is not localized. पूरे एरिया को ही करंट मिलेगा. Okay, and that will be adhered to the superficial muscles. So the major disadvantages कि जो superficial muscles होंगी ना, they will contract more than the deep muscle, क्योंकि यहाँ पे group stimulation हो रहा है. आप एक मसल को थोड़ी स्टिमुलेट कर रहे हो, आप तो ग्रुप ऑफ मसल को स्टिमुलेट कर रहे हो. Ma'am, your voice is low, ma'am. नाउ इट्स ओके. No, ma'am. पहले से कम आ रही है, मैम अभी. अब ठीक है. Yes, ma'am. Now okay. देखो, सुपरफिशियल मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप पेन इलेक्ट्रोड थोड़ी यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप दोनों पैड इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो. तो अगर आप दोनों पैड इलेक्ट्रोड कर रहे हो तो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ मसल विल कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन अगर वो वाटर पे है तो जो सुपरफिशियल मसल्स है उनका स्किन रेजिस्टेंस जल्दी लोअर हो जाएगा एंड दैट विल कॉन्ट्रैक्ट मोर देन द डीप मसल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वाटर. सेकंड इज चांसेस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इज हायर. क्यों? अगर हल्का सा भी पांव हिल गया पेशेंट का from the water, what will happen? Circuit will not be complete and automatically the patient would have a electric shock. Agree? All of you agree with this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Faradic foot bath, they can be used to stimulate the lumbrical, plantar interossei and abductor hallucis. What is the position? First of all, it should be in high sitting with back well supported. The feet should be on a stool which is covered with a plastic sheet, because wood is a good conductor of electricity or bad conductor of electricity? Wood. Bad Bad, conductor. bad.
bad conductor of electricity. Therefore, the stool should be covered with a plastic sheet and place the foot in a bath containing enough warm water to cover the toes. This is how it looks like. Can you appreciate this better? Now, to stimulate Yes. the lumbricals of the lower limb, one electrode is under the heel, whereas the other electrode is under the metatarsal head. This tray is filled with water, this much amount of water that the toes are dipped in water. Okay? So you need to remember two position. Where is the heel? अच्छा, अब इसमें मुझे बताओ एक्टिव कौन सा होगा, इनएक्टिव कौन सा होगा अगर लम्ब्राइकल्स को कर रहे हैं हम स्टिमुलेट तो? खुशबू, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्टिव कौन सा होगा, इनएक्टिव कौन सा होगा? काजल, Yes, ma'am. Black one is active. नहीं नहीं, अंडर द हील वाला एक्टिव होगा या मेटाटार्सल हेड वाला एक्टिव होगा? लम्ब्राइकल का ओरिजिन इंसर्शन क्या होता है? यस आस्था, एक्टिव कहाँ होगा, इनएक्टिव कहाँ होगा बेटा? मैम एक्टिव मेटाटार्सल हेड पे होगा. वेरी गुड, एक्टिव विल बी मेटाटार्सल हेड. बेटा अगर आपको रीजन इंसर्शन नहीं भी आता तो भी एंटीड्रोमिक कंडक्शन और ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन को देखो ना, जो ज्यादा डिस्टल होगा वहीं पे एक्टिव होगा, क्योंकि एंटीड्रोमिक कंडक्शन को हमको वी हैव टू गो विद द एंटीड्रोमिक कंडक्शन. यस और नो? गुड. Hera is absolutely correct that the active one would be under the metatarsal head, that is the black one, and the other one, that is the inactive one or the red one, would be under the heel. Okay, students? Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, what about when we stimulate the plantar interossei? We have to see. Can you see here, beta? प्लांटर इंटरऑशियाई को स्टिमुलेट करने के लिए वो क्या कह रहे हैं? प्लेस वन इलेक्ट्रोड ऑन ईच साइड ऑफ द फुट एट द लेवल ऑफ मेटाटार्सल शाफ्ट. ओके, बट इसका जो प्लेसमेंट होगा, जो ये है बेटा इनएक्टिव इलेक्ट्रोड, ये थोड़ा सा प्रॉक्सिमली होगा टुवर्ड्स द मेटाटार्सल, एंड जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा वो थोड़ा डिस्टली होगा. ओके स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ठीक है, ये सारे बाइपोलर मेथड है. क्यों बाइपोलर मेथड है इन दी बाथ टब? बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर इन दी वाटर. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब फॉर abductor hallucis, one electrode would be placed under the heel, so this would be the inactive electrode. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? Stimulate the muscle through the motor point using a pen electrode. So here this is the inactive electrode, और यहाँ पे through the pen electrode the therapist is stimulating the. Yes, so here it is the inactive electrode, and here through the pen electrode the therapist is stimulating the which muscle? Abductor hallucis. Okay students, so this is unipolar or bipolar? क्या होगा बेटा ये? Yes, Unipolar. this is unipolar. Correct, because only one electrode is inside the bathtub. अब सर्ज ड्यूरेशन कितनी होती है? सर्ज इंटरवल कैसे होता है? See,
A surge Faraday current में surge duration is 1 second and interval is 3 second. There the rest period is more. So it is 1:3. 1 second के लिए देते हैं और 3 second का rest देते हैं. Okay. Intensity, it is enough to produce a visible contraction of the muscle, or you can say according to the comfort also of the patient. Okay. And the treatment time here is between 15 to 30 minutes. Is it clear, students? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. So, अब इसमें कौन से electrodes use करते हैं हम? We use rectangular metal or carbon rubber electrodes of 3 into 7 centimeter can be used. हाँ, there's one important thing which I wanted to tell you. जो pen electrode होता है ना बेटा, उसको हम generally when we use it on the peripheral limbs, okay, or onto the face, we cover it with a lint pad. Yes? Yes, or ma'am. no? Yes. But यहाँ पे Yes, water तो ma'am. है ही medium, है ना? यहाँ पे water तो है ही medium. So we don't require any coupling medium here. This is very important. क्योंकि coupling medium तो water है ही ना बच्चे इधर. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So and also while you are giving the contraction, you should encourage the patient to contract the muscle voluntarily with the current. So you should be, as I always say, you should be well versed कि कब आपका करंट आ रहा है. जैसे ही आपका करंट आएगा तभी आप पेशेंट को बोलोगे contract, relax, contract, relax. Okay? मैम हाँ जी. मैम आपने यहाँ बताया कि रेक्टेंगुलर मेटल और कार्बन रबर इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड. हाँ. Ma'am, a carbon rubber electrode means it is insulator, ma'am, and but metal is a good conductor, no, ma'am. So the patient can get shock, no, ma'am. No, but it is dipped in water now. There is a coupling medium also. So that will enhance the amount of stimulation which is giving to the foot. Okay. Okay. There is nothing that you are not using the complete coupling medium. A coupling medium here is water. I'll share my experience. What had happened? I was giving my second year Viva. This I'm telling you 10-15 years back. Okay. So there the external asked me, I had a question of Faraday foot bath only. So I was not able to answer that particular time. And the question was similar as, the Rahul has put on. It was somewhat same. Okay. I still remember it because I was not able to answer it. What had happened? The external had asked me about Faradism under pressure and everything. Okay. And there was a stimulation also. Everything went well. Then he asked me during the Viva, ki, if you go to a place, okay, where you have to apply the stimulator, but there is no water and your gel is also finished, how will you apply group stimulation of face? So my first answer was, I will take the drinking water. So he said, no water is available. Anybody knows what is the answer? Now I ask this question from students. Anybody knows what is the answer? Can anybody try? Yes. Rahul, Astha, am I audible? There is so much Yes, tranquil ma'am. Yes, in ma'am. the Audible. class. Everybody is so calm, tranquilizing effect is coming. Yes, what would be the answer? Can somebody tell me We can use any medium. which medium? Can you tell me? Ma'am, can you please repeat? I just missed. See, you are in a place, okay.
You have to apply the stimulator on the face. There is no water with you. There is no coupling medium with you. What will you apply? कैसे करोगे आप? What will you apply? How will you stimulate that particular muscle? आपके पास पानी भी नहीं है, जेल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे करोगे? Tell me. Yes, Alfia. Yes, ma'am. I'm कैसे thinking. करोगे? Anybody? आस्था, हेरा, खुशबू, अरोबा. No idea, ma'am. सोचो सोचो. दृष्टि, काजल, कृतिका, मारिया. Shall I tell you Ma'am, the answer? एयर की तो मीडिया होती है. नहीं, एयर कैसे कर लोगे? एयर को आप क्या कैन यू कीप इट विद यू? क्या उसको कैद करके रख सकते हो आप एयर को? no, ma'am. Yes, Astha, can you tell me the answer? Shall I tell you the answer? Ma'am, Yes, ma'am. conductors Yes, Rahul. of electricity. What Rahul? No, ma'am, nothing. नहीं बोलो ना please. Continue. Ma'am, like something which is good conductor of electricity. हाँ, क्या होगा? Metal. बेटा कुछ है ही नहीं वहां पे. My wildest guess can be like, ma'am, no, ma'am, nothing, ma'am. I know the thing is like that. I was also in a shock when I got to know the correct answer. Rahul, do you want to try? Ma'am, you tell, ma'am, let me see if I was correct or no. No, Otherwise, I want to hear from you. no, ma'am. I think I went a bit far away, ma'am. No, ma'am. It is saliva. Ma'am, yes, ma'am, I thought, ma'am. Ma'am, even I thought of using saliva. Ma'am, but I The thought that correct how will we answer apply is that to patient? saliva. We have Ma'am, to at times apply. And ma'am, you if the know, patient like comes to know, he will feel awkward, no, ma'am. He will think that the doctor is putting his saliva on my face, and how will he? no. You will put his saliva on the Okay, electrode. okay, You will okay, not okay. put Ma'am, your saliva. infections and other things. Ma'am, what infections and other things? No, nothing will happen because the current will flow through it. So there will be electron conductivity. So if there will be electron conductivity, what will happen? There will be electrolytes under the electrode. So automatically everything would be vanished off. Nothing virus bacteria will stay ever on the electrode. Okay. Yes, ma'am. That was a very interesting one. Yes, You ma'am. will Ma'am, never ask forget it. ma'am, ask the same question during the practicals, ma'am. I often ask it. Yes, ma'am. because Please ask this because I time too. was so next is Faradism under pressure. Now what is this? This is electrical stimulation as the name specifies. You are applying the Faradic current with the compression. So there is electrical stimulation of muscle with compression and elevation of the limb. Why you want to do it? Because you want to facilitate venous and lymphatic drainage, and once there will be facilitation of venous and lymphatic drainage, automatically there will be reduction of swelling or edema. So this is known as Faradism under pressure. Okay. Normally, see, जब हम फुट बाथ देते हैं तो हम पेशेंट को हाई सिटिंग में पोजीशन करते हैं. These are very simple things, but you should always remember it. Whereas जब हम Faradism under pressure देते हैं तो we position the patient in supine. Okay.
and the limb of the patient is elevated above the heart level using the pillows. ठीक है. Now there is pressure bandage also here. देखो वहां पे वाटर था बात की वजह से, यहाँ पे प्रेशर है तो एक प्रेशर बैंडेज होनी चाहिए. Is it clear? So the pressure bandage which is applied from the distal to the proximal area. Okay, and the skin must be clean before treatment. Now how will you be placing the electrode for lower limb? So the active electrode will be placed over the belly of the calf muscle, whereas the passive electrode is placed over the sole of the foot. तो यहाँ पे जो कंडक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी. क्यों ऑपोजिट होगी? आप पूछोगे मैम आप ऑपोजिट क्यों कर रहे हो? आप तो हमेशा कहते थे कि एंटीड्रोमिक कंडक्शन ही होनी चाहिए अगर हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करें. यहाँ पे हम फैराडिज्म अंडर प्रेशर दे रहे हैं फॉर द रीजन दैट वी हैव टू रिलीज द एडिमा. हमको स्वेलिंग को कम करना है, हमको वीनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज को फैसिलिटेट करना है. उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड होना चाहिए वो मोर प्रॉक्सिमली होना चाहिए, और जो आपका इनएक्टिव इलेक्ट्रोड होना चाहिए वो distally होना चाहिए. Am I clear? Because the venous and the lymphatic drainage is always in the opposite direction to the direction of the blood flow and the direction of the muscle contraction. Am I clear to everybody? Yes, ma'am. Okay. Yes, Now ma'am. now the place, so you should know the reason. आपको रीजन जरूर पता होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, and that all is because of the antidromic and orthodromic conduction. Okay, now what about the placement of electrode for upper limb? The active electrode over the flexor respect of the forearm at the junction of proximal 1/3 and distal 2/3 of the muscle belly, whereas the passive electrode will be over the palm or the cubital fossa. अब ऊपर की तरफ क्या होता है? ऊपर की तरफ इतना ज्यादा आपने पढ़ा भी होगा जनरल एनाटॉमी में अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम, राइट? तो जब ऊपर का जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है दैट इज मेजरली confined to the forearm. ठीक है, पाम और क्यूबिटल फोसा इतना काम नहीं करता, तो यहाँ पे अगर आप पैसिव इलेक्ट्रोड पाम में भी रख दो देन ऑल्सो इट्स ओके, एंड क्यूबिटल फोसा में भी रख दो देन इट्स ऑल्सो ओके. बट आपको एक्टिव इलेक्ट्रोड जो होना चाहिए वो हमेशा फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म पे रखना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली जहां पे आपका मेन बेली आता है ना, फ्लेक्सर रिस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म पे, वहीं पे आपको एक्टिव इलेक्ट्रोड रखना चाहिए. इनएक्टिव आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम इन केस ऑफ अपर लिम्ब, क्योंकि जो मेजर अमाउंट ऑफ वीनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज इज कॉम्प्रोमाइज्ड इज ड्यू टू द लोअर लिम्ब, बिकॉज हमारा वेट बेरिंग होता है, हम खड़े होते हैं तो नीचे की तरफ वो सारा फ्लो चला जाता है और उसका कंडक्शन नहीं हो पाता. ऊपर का तो फिर भी वी कैन डू बिकॉज देयर इज द स्पेशलाइज्ड लिम्फ नोड्स व्हिच आर प्रेजेंट लाइक the axillary lymph nodes and the brachiocephalic lymph nodes. Okay, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें क्या करते हैं, इसमें चेंज हो जाता है, उधर 1:3 था, यहाँ पे 3:9 होगा. रेस्ट आपको ज्यादा देना पड़ेगा. आपको रेस्ट ज्यादा क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आपको पंपिंग कराना है ऑफ द बैड ब्लड, right? And intensity is enough to produce a visible contraction. अब इसमें visible contraction क्यों देखते हैं? आप बोलोगे मैम हम तो lymphatic drainage कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हमको intensity में क्यों देखना है visible contraction? हमें visible contraction intensity में इसीलिए देखना है ताकि हमें ये पता चले कि फैराडिक जो देता है रीजन, मतलब जो वो करंट यूज होता है फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है. इसीलिए हमें ये कंफर्ट के हिसाब से नहीं होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस अ विजिबल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, एंड मोस्टली कौन सी मसल देखोगे आप? डिस्टल एंड की, दैट इज टोज और फिंगर्स. और ट्रीटमेंट टाइप सेम होता है बिटवीन 15 to 30 मिनट्स. इसमें भी हम रेक्टेंगुलर मेटल और कार्बन रबर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, बट ये थोड़ा छोटा होता है. इधर जो करते हैं हम वो बड़ा होता है बेटा, 3 to 7 होता है, और ये वाला 3 to 5 होता है. एंड
Also, if patient can agree with you, encourage the patient to do active movement along with the current and relax during surge interval. अब हो गया प्रेशर, हो गया बात, हो गया. एक और नई चीज है, that is Faradism under tension. You will not be finding this in Clayton's, okay, but you should know about it. अब Faradism under tension क्या होता है? अब टेंशन कहाँ होती है? जब कॉन्ट्रैक्चर्स फॉर्म होते हैं, लाइक एल्बो का कॉन्ट्रैक्चर हो गया, क्वाड्रिसेप्स का कॉन्ट्रैक्चर हो गया, तो कॉन्ट्रैक्चर्स के केस में भी हम Faradism देते हैं. Okay, so what is happening? There is shortening of the contractile soft tissues like the muscles, so that can be treated with Faradism. So such contractures कहाँ होते हैं? एल्बो पे होते हैं और quadriceps पे होते हैं. कॉन्ट्रैक्चर हो कैसे जाते हैं? Because of the prolonged immobilization. ठीक है, पर अगर आप पैसिवली करोगे ना मोबिलाइज, so it would be very painful for the patient. ठीक है, अब अगर सर्ज कारण से हम टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन देते हैं ना, तो जो मायोफिब्रिल्स होते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं, दे विल बी एबल टू कम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर विथ लेस पेन. ओके, इसमें हम जो ड्यूरेशन और इंटरवल है वो प्रेशर जितनी ही लिख सकते हैं, दैट इज 3 सेकेंड टू 9 सेकेंड, और इंटेंसिटी इतना होता है कि जहां पर भी आपने अप्लाई किया है एक थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा हो बस, बिकॉज हियर द एक्टिविटी यू हैव टू डू इट एट द टिश्यू लेवल. ट्रीटमेंट टाइम सेम होता है. यहाँ पे इलेक्ट्रोड और बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ 5 to 10 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्चर फॉर्म है बेटा, पूरे मायोफिब्रिल्स आपस में मिले हुए हैं. उनको आपको उन एडिशंस को आपको क्या करना है? ब्रेक करना है. करेक्ट. सो देयरफॉर द इलेक्ट्रोड शुड बी मच मोर बिग, बिकॉज हियर अगर एल्बो का कॉन्ट्रैक्चर हो गया, क्वाड्रिसेप्स का कॉन्ट्रैक्चर हो गया, तो आपको ग्रुप स्टिमुलेशन भी देनी पड़ेगी, और अगर आपको ग्रुप स्टिमुलेशन देनी पड़ेगी तब भी इलेक्ट्रोड की लेंथ जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए. अग्री, डिसअग्री? Yes, ma'am. ठीक है, और बाकी एक्टिव मूवमेंट्स तो आपको करानी है. अब क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्चर और एल्बो कॉन्ट्रैक्चर, यही दो होते हैं Faradism अंडर टेंशन का, तो आपको सिर्फ इन दोनों की पोजीशन याद रखनी है. ठीक है, फॉर क्वाड्रिसेप्स contracture, the patient is positioned on a plinth or in a supine line. ठीक है, so a roll of towel or pillow is placed below the knee to give a stretch. ठीक है, जो passive electrode है is placed over proximal 1/3 of the quadriceps, and the active electrode is placed on the junction of the proximal 2/3 and distal 1/3 belly of the muscle. ऐसे, this is the active beta and this is the inactive. ओके, सुपाइन लाइन में था पेशेंट, बट क्योंकि जो क्वाड्रिसेप्स होती है इसका एक्शन क्या होता है? नी का एक्सटेंशन. करेक्ट. तो आपको थोड़ा सा जो रोल है या पिलो है, दैट यू हैव टू कीप अंडर द नी. ओके स्टूडेंट्स? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब एल्बो फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्चर में अगेन द patient is positioned on the plinth and a roll is placed under the elbow just proximal to the joint. Then there is a passive electrode which is placed over the proximal 1/3 of elbow flexor, and active electrode is placed on distal 1/3 of the belly of the muscle. ठीक है, अब इलेक्ट्रोड स्टिमुलेशन टू पेल्विक फ्लोर मसल्स भी दी जाती है in the cases of stress incontinence or incontinence which is followed by prostatectomy. इसमें the position of the patient is side lying, giving a pillow which is between the lower leg and placing a plastic sheet under the patient. The indifferent electrode is lumbosacral region, and insert the active vaginal or rectal electrode, and there will be sterilized lubrication. I think you cannot do this without supervision of us, so it is better you don't read this. Okay, you just remember about the quadriceps and the elbow, and nobody will even ask you about Faradism under tension, because in books it is still not there. Okay students, so with this we finish with Faradism and galvanic. Yes, okay. So in the first Yes, ma'am. module, you have low frequency current, that is Faradism, galvanic, and the TENS. So TENS you all have done, I suppose, right? TENS हो गया है ना बेटा आपका? No, ma'am. TENS नहीं हुआ. Okay. So I will take TENS in the
tomorrow's class. ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Any doubt in low frequency current? No, ma'am. Start studying बेटा, because सारे current हम इकट्ठा पढ़ेंगे ना, so that would be difficult for you. Okay, see, major thing about current is low frequency, medium frequency, high frequency, less than 1000 hertz, 1000 to 10000 hertz, more than 10000 hertz. So less than 1000 hertz में galvanic, intermittent galvanic, faradic, surge faradic. Okay, then tens. ठीक है, medium frequency में you already know. Yes, which is the medium frequency current? Can somebody tell me? That class, Asta, you were telling me about the medium frequency current, right? Tanishka. No, ma'am. IFT, who was talking about IFT? Now nobody will come up. बताओ IFT में क्या होता है? Ma'am, 4000 hertz पे होता है current, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा फिर? Ma'am, in IFT we use two medium frequency currents which हाँ pairs and create the beat frequency to हाँ, produce the desired and that beat frequency is low frequency. low frequency current. Yes, तो ma'am. हम, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपको लो फ्रीक्वेंसी चाहिए था तो आपने दो मीडियम को क्यों किया इंटरफेस? टेंस यूज कर लेते, फैराडिक यूज कर लेते, गैल्वानिक यूज कर लेते. This is a very common question which is asked during practical. That is why I'm asking you. अगर आपको बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो लो फ्रीक्वेंसी है ना, मान लीजिए 4250 एक चैनल से आ रहा है, 4000 एक चैनल से आ रहा है, दोनों को आपने इंटरफेस किया, 250 आया. ठीक है, अब ये जो 250 हर्ट्ज है, that comes under the notion of low frequency current. Yes or no? Yes, ma'am. है ना? तो फिर आप टेंस क्यों नहीं यूज कर लेते? Ma'am, क्या हम उस Ma'am, body because TENS जो है मैम वो cutaneous nerve को stimulate करेगा and IFT मैम हम उससे muscle stimulate भी कर सकते हैं. क्यों मसल स्टिमुलेट कर सकते हैं आईएफटी को? देने वक्त तो वो लो फ्रीक्वेंसी दे रहा है. मैम वो डीपर पेनिट्रेशन देता है IFT. कैसे दे रहा है डीपर प्रेजेंट पेनिट्रेशन? जब इंटरफेस करके तो लो फ्रीक्वेंसी दे रहा है. Ma'am, we use two different medium frequency because to avoid the resistance. हाँ, what kind of resistance? Good. Little more refine. Impedance. Skin impedance. So what is the formula of skin impedance? Z is equal to the half by FC. हाँ, तो अब इसको कैसे डालोगे उस फॉर्मूला में और मुझे समझाओगे? Z हो जाएगा मैम स्किन रेसिस्टेंस, F हो जाएगा मैम जो फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज जाएगी जो लो फ्रीक्वेंसी रहेगी, एंड मैम C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी और स्किन. तो कौन बढ़ रहा है कौन कम हो रहा है जब आप आईएफटी दे रहे हो, और कौन बढ़ रहा है और कम कम हो रहा है जब आप टेंस दे रहे हो? मैम अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो स्किन इम्पीडेंस ज्यादा होगा मैम. हाँ, तो अगर आप दो मीडियम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हो तो क्या होगा? स्किन इम्पिडेंस शुरुआत में मैम बढ़ेगा. बढ़ेगा तो क्या नो होगा? कम हो कम जाएगा. होगा. फिर मैम कम होगा
तो इसलिए मैम हम स्किन इम्पिडेंस को बढ़ाने के लिए मैम हम लो फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं आईएफटी में। स्किन इम्पिडेंस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर स्किन इम्पिडेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? मेरा आंसर तो अभी तक नहीं दिया आस्था। You know, I'll tell you. I went for an interview. Okay. Telling you 2 years back. Very reputed institute. The first question they asked me was this. So this question would be asked to you throughout your life. That is why I'm telling you. Be clear with it. स्किन इम्पिडेंस करंट का क्या रिलेशनशिप होता है? क्यों हम हाँ बोलो। मैम स्किन इम्पिडेंस अगर रेजिस्टेंस को शो कर रहा है और मैम वो करंट के लिए ऑब्स्टिकल होगा मैम। कौन से करंट के लिए ऑब्स्टिकल होगा आस्था? मैम लो फ्रीक्वेंसी के लिए। देखो ऑल ऑफ यू, आई विल अगेन गिव यू सम टाइम, ठीक है? टुमारो आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन, ठीक है? All of you on a piece of paper write, why do we prefer IFT over TENS in a flow chart kind of a manner with taking into consideration skin impedance? Am I clear, students? For Yes, ma'am. now it must be, you won't take it seriously, but I'm telling you, this question is asked after many years of working as a physiotherapist also. Am I clear, students? Clear or not? All of you will do that? Clear, ma'am. All of you will do this, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Anisha, Anubhav, Bhumika, Charu, Yes, Chetna, Yes, Aroba, ma'am. Divansh, Yes, ma'am. Dimpi, Drishti. So I Yes, consider ma'am. that tomorrow my first question would be medium frequency current. See, in medium frequency, you only have to read IFT. So you must be reading IFT. Okay. But my only doubt in IFT is that all of you should be clear that why we are using IFT over TENS. Though IFT is giving a low frequency current, then why don't we go with a low frequency current? We have better low frequency current like Faradic and galvanic. We are making them comfortable also. सर्च फैराडिक को हम कंफर्टेबल भी तो कर रहे हैं ना बेटा, फैराडिक हम डायरेक्ट तो नहीं अप्लाई कर रहे हैं। Yes or no? My question is valid or invalid? Just tell me. Yes, ma'am. Ma'am, valid. Valid na, so I need the answer in a proper manner so that your conceptual framework is ready for why you are using and why you are doing it. Am I clear? Am I clear, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Just a second. Answer to your roll call. I think there are 6 students not in the class today. Chavi, can you tell me who all are not there in the class? Yes, ma'am. Ma'am, Manik, Hmm. Rohit, Ikra, Hmm. Zishan, and Alia. Pulkit, are you there? Yes, ma'am. Alia is not there in the class. Yes, Chavi, Alia is not there, na? Yes, ma'am. Manik is also not there. Malia, Zishan. Hamad. Maria, are you there?
Yes, ma'am. Shivani, are you there? Yes, ma'am. Okay. Okay, so is it clear, beta? Faradism, sorry, Faradic foot Yes. bath, Faradism under pressure, and Yes, Faradism ma'am. under tension. कहाँ कहाँ यूज होते हैं? देखो, all three of them are used differently. ऐसा नहीं होता कि आप एक ही केस में तीनों यूज कर सकते हो. And the coupling media is also different, and the indication is also different. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so soon after 10th we will be having electrotherapy practical and theory also, so that I will tell you by this week end on Thursday or something like that. ठीक है, ताकि आपका 1122 मॉड्यूल you are prepared with it. Okay. Yes, ma'am. So any doubts, anybody?